हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलकम। और इस वक्त मेरे साथ जी करदा की कमाल की जो जोड़ी है, दैट्स तमन्ना भाटिया, सुहेल एंड डायरेक्टर अरुणिमा। गाइस, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि जो फर्स्ट टीजर आया था, उसके बाद ट्रेलर आया और अब तो पूरा शो इज आउट। तो जो मतलब लोगों को काफी रिफ्रेशिंग लगा था, लेकिन आप लोगों से जानना चाहूंगा रिएक्शंस, फीडबैक्स कैसे आ रहे ये मोस्टली पॉजिटिव ही आ रहे हैं और हैं? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत अच्छी फीलिंग है जब आप इतनी मेहनत करते हैं किसी चीज में, और इतना मेहनत से भी ज्यादा बोलूंगा बहुत प्यार से बनाया हमने ये शो। और हर इंसान ने, किसी ने इसमें ऐसे नहीं किया कि अच्छा मैं तो सिर्फ एक्टर हूं, मैं सिर्फ एक्टर का काम करूंगा, या मैं सिर्फ क्रू मेंबर हूं, मैं वही काम करूंगा। सबने बहुत दिल लगा के ये शो बनाया, और एक्चुअली में ये हमारा शो है, ये हम सबका शो है। तो ऐसा फील होता है। तो अगर किसी को पसंद आता है, कोई किसी पर्टिकुलर चीज की तारीफ करता है, तो हमको बहुत अच्छा लगता Hi Divya. हाय तमन्ना। Divya, I think this is actually a very difficult genre to crack. And I think Arunima did a really amazing job with, bringing so much of profoundness to a slice of life. Because whenever you have, and because it's an ensemble and there are so many people, बहुत आसान होता है कि to lose objectivity of what are you trying to kind of eventually say. But I राइट। think Arunima is such a fine filmmaker. Um, and that we are seeing translating in reviews of people and of people who've seen the show. They feel it's extremely relatable. Um, I've even read reviews which say predictable, but yet you want to binge watch it. So I think there is a sense of, there's a comfort in the familiar. But of course, it's because it's only so intelligently crafted, can it be, discomforting. So yeah, it's completely Arunima's baby, and she's done a fab job. So captain of the ship, Arunima. So see, when you write the script, तब आप अपने लिए लिख रहे होते हो, right? The life you've lived and the kind of series or a film you want to watch. Then आप actors के पास जाते हो, आपको पता नहीं कि ये लोग relate करेंगे या नहीं, and then they say yes, and then you see them make the characters their own. Film बन गई, series बन गई. अब now it's not ours anymore. Now it's everyone else's. So I have been just reading what are people feeling, and I'm like, हाँ यार, यही मेरा thought था, इनको समझ आ गया. मैं तो उतने में ही, I'm happy that it's not a plot driven a narrative. It's a character driven narrative. The characters are evolving. It is slice of life with some insights and philosophy that we have, but we didn't want it to be preachy. So एक fine balance हमें maintain करना था. So if people are getting the desires and getting even the likeness of it, if they are enjoying it, and that is the feeling I'm getting, that it is being communicated well, people are enjoying the music, and they are relating either to all characters or a few characters. And that I always knew. If all the 7 characters, the friends are so different from each other, कि कोई ना कोई किसी और से ज्यादा रिलेट करेगा, किसी और से कम. So that is the sense I'm getting, and I'm quite happy. एक जमाना था तब ऐसा कहते थे कि योर लाइफ पार्टनर शुड बी योर बेस्ट फ्रेंड, या कि योर बेस्ट फ्रेंड शुड बी अ लाइफ पार्टनर। लेकिन आजकल उल्टा होता है कि बेस्ट फ्रेंड को बेस्ट फ्रेंड ही रहने दो, लाइफ पार्टनर मत बनाओ। तो ऑन दैट टू ईच देयर ओन। मतलब ऐसा कोई सेट रूल नहीं है। लाइक आई एम वेरी ओपन कि मुझे कभी लाइफ में किसी दोस्त से प्यार नहीं हुआ बड़े होने के बाद, मतलब स्कूल से निकलने के बाद। पर क्या पता कल को हो जाए। सो आई एम ऑलवेज वेरी ओपन विद थिंग्स, एंड आई डोंट हैव एनी सेट रूल्स विद लाइफ, बिकॉज लाइफ इज रैंडम, sometimes good, sometimes bad, but it's random. So then that's the beauty of life. I just think that it's not necessary for, your best friend to become your partner. But I do feel like for a long lasting relationship or something that's for real, your partner somewhere needs to be your best friend. And what's the idea of a best friend? It's lack of judgment. Right. It's freedom. When you're with your friends, you feel like yourself. You feel free. You don't feel like you're you don't have to be any, you have no, don't have to have any version of yourself being put out. You can be yourself. So I think that is what I understand.
बट ऑफ कोर्स ऐसा कोई रूल बुक नहीं है, एंड हम में से सिर्फ एक ही शादीशुदा इंसान यहाँ पर है, वो है अरुणिमा. सो वी विल ट्रस्ट हर जजमेंट बिकॉज़ शी इज मैरिड. हम तो मतलब हवा में बात कर रहे हैं, सो दिस इज आवर अंडरस्टैंडिंग. In the show, we are not trying to say कि there is no actually किसी भी track में we are not taking a side, okay, as the filmmaker or the narrator. हम नहीं बोल रहे कि marry your best friend or don't marry your best friend. For me, it was an exploration कि जो मेरे कुछ दोस्त हैं जो स्कूल स्वीट हार्ट्स हैं. आई हैव नेवर हैड दिस लॉन्ग रिलेशनशिप कि मैं स्कूल से ही उसके साथ हूँ और उसके साथ ही शादी. आई समटाइम्स यूज्ड टू, not even now actually, I don't fully understand it, कि इतने साल एक ही इंसान के साथ, you know, that used to happen in like a parents generation. अभी तो we are also like quick, frivolous, have so many like things and insecurities. I don't know, it's like messy, I feel, to have such a long relationship. But then उसमें क्या intricacies हैं, उसमें क्या details हैं, क्या over familiarity आपके passion के बीच में आती है. You know, there's just a lot of layers in this whole long best school के friends till today getting married. इस पूरे arc में बहुत ups and downs, and that's what we are exploring. While Jee Karda deals with, you know, friendship, love, heartbreak, so overall जो feel भी आ रहा है काफी कमाल का लग रहा है. मुझे बताइए शूटिंग के वक्त कितना craziest day क्या था, कैसा था, धमाल क्या हुआ था? पहला schedule I think हमारा बहुत ही hectic था because I was that time working on some bunch of films and I was coming in from another shoot and I was no, actually I shot a song. Yeah, I shot a song. So I was really tired. And we had like the first scene I think we shot was like intimacy. So we were like, this is perfect. I was like, I love this director. Made me comfortable. She was like, मैं बहुत नाच के आई हूँ, अब मुझे बेड पे डेटना है. I'm very happy. That was my first day, and it actually, you know, it was such a I think I still feel like Arunima really got, I think my finest out. She really made a very safe place for me to be able to you know, perform certain scenes without really judging my character. And that was my endeavor with this particular show, that I want to be Lavanya and at no point do I want to judge Lavanya. Because she is, you know, she has this quest for perfection, but at the same time, she has very many desires which she has not even fully explored. So I feel like I love the way Arunima dealt with Lavanya and how she made, how she created the graph for the character. Arunima? हमारा जो पूरा वेडिंग सीक्वेंस है वो हम लोगों ने एक होटल में शूट किया था एंड वी वर स्टेइंग देयर फॉर 10-12 डेज एंड इट वाज एक्चुअली फीलिंग कि मैं अपने कजन्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ एक वेडिंग ही अटेंड कर रहा हूँ, क्योंकि पैकअप के बाद हम लोग किसी के रूम में बैठ जाते थे और हम लोग बातें करते थे एंड इट्स देयर वेयर वी एक्चुअली बॉन्डेड एंड वी गॉट सो क्लोज. लाइक इफ यू वॉच द शो वी एक्चुअली लुक लाइक वेरी क्लोज फ्रेंड्स. जी. एंड आई वाज टॉकिंग टू आशिम टुडे अबाउट इट कि ब्रो हमारी केमिस्ट्री तो ऐसी लग रही है जैसे मेरे दोस्तों के साथ है. एंड ही वाज लाइक हाँ ब्रो, लाइक we are getting this feedback from people and it's very heartwarming. Directors जी, craziest Just adding to what Suhail has said, 7 अजनबियों को बचपन का दोस्त दिखाना, you know, it can come across as so fake, you know. या 15 साल के रिलेशनशिप को दिखाना, you know, कि where you are so familiar with the person's not just touch or words, with the person's breathing pattern, sleeping pattern, कि वो एसी कितने पे रखता है, उसको ठंड ज्यादा लगती है कम. It's too difficult, you know, to put strangers in a room and, you know, expect magic to happen. So थोड़ा ऑर्गेनिकली हुआ मुझे लगता है. पहले तो ये स्किल्ड एक्टर्स हैं, ऊपर से हमने एक वर्कशॉप की जहाँ दे लॉस्ट द इनहिबिशन, दे लाफ, क्राइड, शेयर्ड सीक्रेट्स. वर्कशॉप के बाद शूट पे आए, दे लाइक तमन्ना लेफ्ट फॉर स्टारडम aside and came, you know, like she had no problems, मतलब no tantrums, nothing. वो तो दूर की बात है. She came as a actor like everyone else, as one of their friends. It was very difficult, very important कि कोई हायरार्की ना क्रिएट हो इन सातों में, क्योंकि दोस्तों में नहीं होती और हमारी इंडस्ट्री में कितनी हायरार्की होती है, you know. So that was broken and they all
like hung out and liked each other, and और जो भी हमने नाच गाना भी शूट किया, किसी को एक नाचना भी नहीं आता है, which is okay, क्योंकि सब दोस्तों को नाचना नहीं आता है. They नहीं are आता. trying to make the True, choreography. but I think that's so cute, right? Because actual groups में Yeah. देखो तो एक तो मतलब there's always this one person having this very interesting एक अलग सा मतलब let's say ऑफ दोनों चल रहा होता है off वो. चल रहा है, but सब लोग वो mood में dance कर रहे हैं, so it's very real, I think. Yeah. But you rightly said about Tamannaah, ये तो हम सब भी मानते हैं, she never has that, you know, that starry tantrums or anything. तो ये हमने भी अक्सर देखा है. But you guys have been in film industry for, you know, long good amount of time. आपकी of course first ये big show है, but बाकियों के लिए there's a myth in industry कि कोई सच्चा दोस्त नहीं होता है यहाँ पे. Do you agree to it or do you have good friends out here? I have good friends. आप अपनी बात करो. नहीं, मैं इंडस्ट्री से नहीं हूँ. I don't think it's about the industry. I think it's about just finding the right people. My best friend also works in the film industry, and she is still my best friend. I met her through work. So I don't think it's about the industry. It's just about finding people that are, you know, who actually mean well for you. And yeah, I think ऐसा कोई there is no rule book. Like किसी किसी को मिल जाते, किसी किसी को नहीं मिलते. जिनको नहीं मिलते शायद उन्होंने किसी ने ऐसा कुछ बोल दिया होगा. बस और कुछ नहीं. और मेरे लिए तो दोस्तों ने ही मिलके ये शो बनाया है. एक्टर्स मेरे दोस्त बाद में बने हैं, पर the first of all होमी अडेजानिया, he is one of my closest friends, क्योंकि उनसे मैं कुछ भी डिस्कस कर सकती हूँ. मैं उनकी एसोसिएट रही हूँ और आज we are friends, right? तो उन्होंने मुझे रिलेशनशिप एडवाइस से लेके लाइफ एडवाइस से प्रेगनेंसी तक मुझे बोला है हो जाएगा, तू टेंशन मत ले, प्रेगनेंसी में तेरी स्किन ग्लो करेगी, हेयर ग्लो करेंगे, तू मस्त लगेगी सेट पे डायरेक्ट करते. You know, That's that true. was I second that. Her hair look way better than mine. Yeah, I yeah. promise you, I've बहुत had glow आ visual जाता है. reference. I'd be like, she'd come to explain the shot, and just like her few like curls will be falling, and I'll be like, Arunima, your hair are looking so good. फिर राइटर्स हुसैन अब्बास, वो भी मेरे दोस्त हैं, और हमने अपने दोस्तों के इंसिडेंट्स उनकी लाइफ से चुरा के डाल दिए. एंड देन सचिन जिगर इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, जिन्होंने म्यूजिक किया. उनके पास मैं तब गई थी जब मैं वो अपने हीरोज को नरेट कर रही थी और वो ना बोल रहे थे मेरे फिल्म्स को. तब हम दोनों ने सोचा कि छोड़ो, ensemble लिखो तुम, you know. तो उनके साथ मेरी जर्नी, एंड सो ही जिगर अंडरस्टैंड्स द होल नैरेटिव. एंड उसने जो गाने दिए हैं सचिन जिगर ने, इतने यंग और यूथफुल, एंड शो के वॉइस बन गए, यू नो. तो मेरे लिए मैंने दोस्तों के साथ बहुत मजे करके मिलके ये शो बनाया. वो लोग तो छाए हुए हैं आजकल, मूवी में भी वेब शो पे भी, दोनों जगह पे सचिन जिगर लाइक रॉकिंग. Look at the range, commercial to like Yeah. something that is very different and new age. That might not Yeah. become so big commercially, but जहाँ इस शो को जाना है वहां वो उनका म्यूजिक उसको ले जा रहा है. हार्ट पे. बिल्कुल. तमन्ना, मैंने ये आपसे पहले भी कहा है कि यू नो जब साउथ की मूवीज का बोलबाला जो आजकल तो है, लेकिन जब बहुत हार्डली कुछ था, हम उससे भी बिफोर दैट, अल्लू अर्जुन से भी बिफोर, प्रभास के भी पहले, रामचरण के भी पहले, यू वर द प्रॉपर पैन इंडिया सुपरस्टार. ये फैक्ट है, बिकॉज आपकी पहली पिक्चर जो है, यू नो, यू हैड साइमल्टेनियसली 2 रिलीजेस इन द सेम ईयर, एक हिंदी में एक वहां पे साउथ में, बट हमारे लिए तो हम कहेंगे हिंदी फिल्म वाज द फर्स्ट वन. So, and even when Bahubali 1 came, you know, people, maximum public आप ही को जानते थे. How do you look up to it? आज जब सब अपने आप को पैन इंडिया बोल रहे हैं. I think it's nice. I mean, titles are great, but I think बड़े से बड़ा स्टार at the end लंबा रास्ता नहीं काट सकता अगर वो अच्छा एक्टर नहीं है. तो मेरा तो सिर्फ यही एक गोल रहा है कि मैं अपने इमेज को सीरियसली ना लूं. और ऑफ कोर्स जब बाहुबली हुई थी उसके बाद आई वाज लाइक हाउ एम आई गोइंग टू टॉप दिस सक्सेस. सो आई नेवर ट्राई टू टॉप दैट सक्सेस. आई ओनली वर्क टुवर्ड्स ट्राइंग टू डू डिफरेंट पार्ट्स एंड एक्सप्लोर माई सेल्फ एज एन एक्टर. जब कोई चीज लोगों को पसंद आनी होती है तो वो आ जाती है. बट हमारा सिर्फ ये काम है कि हम अलग अलग चीजें अटेम्प्ट करते रहें, in the hope that people like what we do. But yeah, I mean, each one to his own. I've been very lucky that I've been able to metamorphosize and not take my image very seriously. So yeah, that's how I'm doing it. कई फैंस जानना चाहते हैं, how's your equation with the superstars out there? Prabhas, Ram Charan, Junior, and you worked with all of them. Yes.
See, they're all really like this, like Charan ho ya Prabhas ho, they're all really wonderful people. I'm working with Chiranjeevi sir right now. Yeah. I just work with Rajni sir right now, and I cannot explain to you how humble they are and how easy to work with they are, and they're really hardworking. And I think that's something that I will hold very closely to myself. That at any age or at any point of time in your career, you couldn't have done everything because there's always something that's going to be left. एंड या जब इन लोगों के साथ काम करती हूँ, इन दिग्गजों के साथ काम करती हूँ, तो लगता है कि यही यही सत्य है और यही अपनी लाइफ का ये है कि यू कैन नेवर डू इट ऑल, यू आर गोइंग टू कीप एक्सप्लोरिंग समथिंग न्यू. सुहेल, पिछले साल वी सॉ यू इन शर्मा जी नमकीन, विच वाज अगेन अ लास्ट फिल्म ऑफ चिंटू जी. बहुत स्पेशल फिल्म है, बहुत सारे लोगों के लिए स्पेशल फिल्म है. आपसे जानना चाहेंगे क्या मेमोरीज याद आती है. इट्स बीन अ ईयर. सर मुझे जो मेरी दिल के सबसे करीब मेमोरी है कि चिंटू जी को मैंने अपनी, उस टाइम मेरी फिल्म आई थी होटल मुंबई जी. मैंने उनको बताया था कि सर मेरी फिल्म आई है, आप देखना अगर टाइम मिले. और फिर हमारी ये बात खत्म हो गई. फिर हम ये बॉम्बे में हमने बात की थी, फिर हम दिल्ली में शूट कर रहे थे और हम दोनों गाड़ी में बैठे थे और उन्होंने मुझे अचानक बोला कि यार आई वेंट एंड आई वॉच्ड योर फिल्म, यू वर सो गुड इन द फिल्म. एंड ही वाज टॉकिंग टू मी अबाउट अ सीन, देन ही टुक माय नंबर एंड ही वाज लाइक यार लोग मुझसे एक्टरों के नंबर मांगते हैं, मेरे पास अच्छे एक्टरों के नंबर नहीं होते, तू अपना नंबर दे. और उन्होंने नंबर डाला एंड देन पैकअप हुआ. पता चला उसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई एंड अनफॉर्चुनेटली दैट इज आवर लास्ट कॉन्वर्सेशन नाउ. तो लाइक इट्स ऑलवेज लाइक इट विल ऑलवेज बी वेरी क्लोज टू माय हार्ट कि ये हुआ. तमन्ना, आपने जो रजनी सर एंड चिरंजीवी सर की बात की, ये भी हमारे पास बहुत सारे आपके फैंस के मैसेजेस आए थे कि अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आपके बहुत ज्यादा एक्साइटिंग लग रहे हैं. अगेन रजनी सर वाली फिल्म, चिरंजीवी, देयर इज अ न्यूज ऑफ यू वर्किंग विद सलमान सर इन नो एंट्री में एंट्री. ये भी कुछ रूमर्स चल रहे, न्यूज है, क्या है, बताइए कुछ. चिरंजीवी सर एंड रजनी सर के साथ तो फिल्म्स बन रही हैं, वो हैं. अभी तक there is no other new announcement. I also have done my first Malayalam film this year called Bandra, and I also am doing Arunima, which is a Tamil film, which is I'm trying to kind of do different languages. So it's fun because Hindi hai, Tamil hai, Telugu hai, Malayalam hai. It's an exciting time for me as an actor because the industries अलग-अलग तरीके से काम करती हैं and हर जगह पे कुछ सीखने को मिलता है. So yeah, I'm kind of exploring whatever I can to the max.